Okay, so the time right now is 9:30 और मैं जा रहा हूँ एक सोलो एडवेंचर कैंपिंग ट्रिप पे फॉर अ डे. Basically, I'm gonna be sleeping in my car. Let's go. So the place where I'm going is not far actually. सिर्फ 100 किलोमीटर्स के आसपास है एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा और. टाइम राइट नाउ इज 11. ट्रैफिक जैम. जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ इट इज़ अ प्राइवेट लैंड. दैट मीन्स आई हैव टू पे एंड स्टे. द गुड थिंग अबाउट पे एंड स्टे इज़ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि यू नो दैट इट इज़ अ प्राइवेट लैंड, तो कोई भी किसी भी तरीके से आ नहीं पाएगा. वैसे इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. wherever you go, if you are good, you will only meet good people. 7 more kilometers, like 15-20 minutes max. The time right now is 12:30. सो मैप कह रहा है सीधा जाने के लिए एंड एक लेफ्ट है और एक राइट है, बट स्ट्रेट इज अ डेड एंड. दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट. I'm kind of lost, but I'll take the left. And also it is kind of a off-road patch. Completely off-road patch है, इसीलिए I'm gonna put the car in the off-road mode. Okay. आई थिंक लेफ्ट वॉज द रॉन्ग ऑप्शन. किसी से पूछ लेते हैं, वही ठीक रहेगा. आई टुक द लेफ्ट. You came down, you'll get a nice road, right? Yeah, I'm on the highway now. Before that turn, you'll get a right turn, sir. Take that right turn, like this uphill road. Oh yeah, the kind of U-turn on the. Yeah, the Kacha road uphill. Kacha road, yeah. Take that road. There will be 200 meters same road is there. After that, you'll get a tar road. Okay. From 2 kilometers, sir. Okay. So I need not to go to the highway. I just need to take the U-turn from that itself, right? Yeah, right, sir. Okay, Yeah, cool. I got it. All right, thank you. Okay, मैं समझ गया कहाँ पे जाना है, but it has started to rain और again कच्चे रोड पे वापस जाना है. So there is a road opposite to that. It's a little steep climb. Yeah, let's do that. जाने वाला रास्ता यहाँ से है, तो मैं यहाँ से आया था और यहाँ पे जाना है. Okay, mud mode, climbing up. Oh, this is steep. Oh god. पीछे से सामान लुढ़क रहा है. Okay. Almost there. Okay, almost there. एक और steep hill. Okay, power. Okay, almost. Wow. To the left, he said.
आई थिंक यही रोड है जो सीधा कनेक्ट हो रहा था एंड नाउ द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, सो एक थोड़ा सा डिटूर लेके आना पड़ा एंड आई होप यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर हो, बिकॉज या गूगल मैप इज शोइंग 3 किलोमीटर्स, सो या जस्ट 3 किलोमीटर्स नाउ. It is still drizzling. I have arrived, but अभी भी बाहर बारिश हो रही है, so I'm gonna wear my rain jacket. It is really raining hard. Oh my god. अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है. आई जस्ट वेंट एंड मेट द लैंड ओनर. आई विल फिक्स दिस प्लेस एंड देन आई विल गो. This is what the bed looks like for tonight. Okay, so अभी बारिश बिल्कुल रुक चुकी है एंड लेट मी शो यू माई टुडेज़ कैंप साइट. मैं यहाँ पे कैंप करने वाला हूँ और मेरे बोलते ही बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है. दिस इज़ माई कैंपिंग लोकेशन. बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, सो आई एम गोना गो नाउ चेंज इनटू माय शॉर्ट्स, क्योंकि जीन्स की यहाँ पे ऐसी की तैसी हो जाएगी. आई एम एक्साइटेड फॉर द नाइट. सो इस कैंप पे एक बहुत ही अमेजिंग एडवेंचर एक्टिविटी है विच इज़ कयाकिंग एंड आई थिंक आई एम गोना डू दैट नाउ. इट्स टाइम टू kayak. फर्स्ट एडवेंचर ऑफ द डे. ऐसी बात नहीं है कि आज वैसे भी एडवेंचर नहीं है. द सन इज स्टिल हाई अप. गर्मी अभी बिल्कुल भी नहीं है. द वेदर इज़ जस्ट अमेजिंग टू kayak. द टाइम राइट नाउ इज़ 5 और इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेट टाइम चुना kayak करने के लिए, बिकॉज मैं खुद को टायर नहीं करना चाहता था. एंड राइट नाउ इट इज़ रियली नाइस कूल ब्रीज. इट्स परफेक्ट. नाइस. I will not lie, but this is the best part of this solo adventure camp. Honestly, I'm missing Pallavi right now, but I really wanted to do it solo. I really wanted to. It's kind of fun on the kayak, man. बट दिस इज़ अ नाइस प्लेस फॉर अ वीकेंड गेटवे. जो भी मतलब यहाँ पर आना चाहता है फॉर अ वीकेंड गेटवे, दिस इज़ अ नाइस प्लेस. सो यहाँ पर ओवरनाइट कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे डे आउटिंग कर सकते हैं. सो आई एम गोना बी स्टेइंग ओवरनाइट. या Okay, I think it's time to go back.
Okay. That is it for kayaking. इससे पहले अंधेरा और ज़्यादा, देयर इज सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, इससे पहले अंधेरा और ज़्यादा हो, लेट मी शो यू माई कैंपिंग सेटअप. सो दिस इज़ माई कैंपिंग सेटअप लुक्स लाइक. मैं यहाँ पर सोने वाला हूँ और यहाँ पे कचरा है बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं. यहाँ एक लाइट है रात में, काइंड ऑफ शेल्फ काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक अ लिटिल शेल्फ. ये है पानी एक दिन के लिए. ब्रेकफास्ट, another breakfast, biscuit and yeah, coffee. गाड़ी में एक मच्छर है, आई थिंक एक नहीं दो है. ओह माय गॉड, कैन यू हियर इट? फॉर प्रीवियसली आई हैव दिस कर्टन. मैं घर से एक बेडशीट लेके आया हूँ जो मैं पीछे वाले शीशे पे डालने वाला हूँ. आगे वाला शीशा मैं ऐसे छोड़ने वाला हूँ. इससे पहले मच्छर मुझ पे हमला कर दें, ओडोमॉस, मैं इसे अपने पूरे शरीर पे लगाने वाला हूँ, मुंह पे भी. I'm ready for mosquitoes. Bring it on. I'm also a big fan of Formula 1, so I'm gonna watch Formula 1 from my car. I mean to say from my bedroom today. The time right now is 8. It is completely dark outside, so the race is not starting. In the meantime, मैं सोच रहा हूँ let's go check out what is in the dinner. Actually जो camping place है, यहाँ का जो owner है, he also provides food and accommodation like tent, और यहाँ पे वो लोग provide करते हैं. But I didn't want a tent because I'm sleeping in my own car. But food, yes, मैं खाना खुद से नहीं बना सकता, इसीलिए मैं खाना यहाँ से लेने वाला हूँ. But tomorrow's breakfast, I think I'm gonna make it. I guess campfire हो रही है. हाँ, let me go check it out. Time for the dinner. पनीर है and गोभी मंचूरियन and roti. I'm hungry after that kayaking. The time right now is 9:20. मैं बस अभी डिनर करके आया and I'm just making my bed for the one final time. मैं बस कपड़े चेंज करूँगा सुबह के and I will sleep. I think this is going to be one of the longest night. Okay, one final time I'm just turning on the lights. सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कहाँ पे सो रहा हूँ. Basically this is the whole place. This is where I'm sleeping. Curtain is up. The time right now is 9:30. मैं थोड़ी देर एक बुक पढ़ूँगा and then I'll sleep. The time right now is 7 in the morning. I slept like okay. ये कार दो लोगों के लिए नहीं है. This is fine for one person but not for two.
Time to make some breakfast. दिस इज़ मैगी चिली चाव कप्पा. इसमें बिल्कुल भी चिली नहीं थी. ऑल्सो मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, सो ये वैसी मैगी हो गई है जो ज़्यादा पानी के बाद में हो जाती है. बट इट इज़ स्टिल टेस्टी बिकॉज आई हैव मेड इट. ब्रेकफास्ट मेड बाय मी. तो जब मैंने कहा कि दो लोग इसके अंदर नहीं सो सकते हैं कंफर्टेबली, व्हाट आई मेंट वाज, जब कल रात में इस गाड़ी के अंदर सोया, सो दिस वाज माय स्पेस एक्चुअली. लेकिन मैं पूरा फ्लैट इसके ऊपर नहीं आ रहा था, सो आई हैड टू मूव इट डायगनली. इसका मतलब मैं गाड़ी में टेढ़ा सोया पूरी रात. नॉट अ प्रॉब्लम, बट बिकॉज ऑफ दैट दो लोग इस गाड़ी के अंदर नहीं सो सकते. सो वन नीड्स टू हैव अ टेंट एंड अनदर गाय कैन स्लीप इन द कार. द टाइम राइट नाउ इज़ 9:30 and I'm possibly gonna leave. The sun is out. It has started to get a little hot right now. Yeah, a great place though, a great place. अब मुझे पूरा पैक करना है वापस से. It is all messed up to every possible way. The car is a total mess right now. I'm filled in sweat. Time to leave. The time right now is 10 और यहाँ से 2 घंटे घर पहुँचने के लिए. Okay, so 40 more kilometers from here, almost like 1 ghanta. I hope you guys really enjoyed this camping trip with me. Oh, there was a train going. If you really enjoyed this video, please don't forget to subscribe, like if you like it, and I'll see you in the next one. If you're watching it, if you're not liking it, and if you're not subscribing it, it's a crime. I'm just kidding, man. Please do subscribe, it helps me. Thank you. Bye.